हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। डिटर्मिनेटर सेकंड वीडियो नहीं गया कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करिया, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिया। चलो तो स्टार्ट करिया वीडियो। इफ aij is the element in the ith row and jth column, कौन गिवन अछि ith row and jth column? व्हाट डू मीन बाय दैट? रो और जो कॉलम इंडेक्स अछि, रो आउ कॉलम इंडेक्स, आई होची रो इंडेक्स, जे होची कॉलम इंडेक्स और फिर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जोड़ा अछि सेटा 3/3 ऑर्डर, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, whose value is 1. डिटर्मिनेटर वैल्यू केते अछि 1. if cij is the cofactor, cij cofactor, aij element और तार cofactor अछि cij, what is the value of this? एटा क्वेश्चन अछि। बेसिक्स कोन एथि पय देखन। देखो जदि a11 एलिमेंट अच्छी a12 एंड a13, a11 सहित जदि c11 आसला, a12 सहित c12 आसला, a13 सहित c13 आसला, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा मतलब वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, राइट? जदि a11 सहित c11 आसिलानी, c12 प्लस a12 सहित c12 आसिलानी, c22 एंती कौन आसला, a13 सहित c13 आसलानी आ कौन आसला c23, ये वैल्यू 0। जो एलिमेंट दिया है, जो एलिमेंट दिया है सही एलिमेंट सहित जदि तार करस्पोंडिंग कोफैक्टर एलिमेंट आसला, देन द वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। आ को अलग एलिमेंट आसला, देन दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिक्स यू नीड टू यूज। कौन करबा देखो तो ये क्वेश्चन रा आंसर जण मल्टीप्लाई कर जो a11 into c11 प्लस a12 into c21 प्लस a12 into c12 प्लस a12 into c22 प्लस a13 into c13 प्लस a13 into c23, right? This is the value required. Look, a11 c1 और a12 c2 और a13 c3, this is equal to delta. अरेंज करो जब लिखिए a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13 गोटे प्लस a12 c21 जोड़ा पड़ला a12 c22 प्लस a13 and c23. This value is equal to determinant. कहीं जो एलिमेंट अच्छे तार करस्पोंडिंग कोफैक्टर अच्छे डिटरमिनेंट प्लस एटा जो एलिमेंट अच्छे तार करस्पोंडिंग कोफैक्टर ना माने 0। अब डिटरमिनेंट वैल्यू आपन देछि 1, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 1, तो डेल्टा विल बी 1, so 1 plus 0 is equal to 1. So this is the answer of the question. लंबा चौड़ा क्वेश्चन देछि, किछि नाही क्वेश्चन। aij is the element of ith row jth column of a 3/3 order determinant। माने aij कोन गोटे डिटरमिनेंटर एलिमेंट, को एलिमेंट ith row jth column रे एलिमेंट, तार को फैक्टर अछि cij। जदि एमती हला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कौन मन रखिया अछि डिटरमिनेटर जो एलिमेंट नेबे सही एलिमेंट सहित सही एलिमेंट रो को फैक्टर आसला, करस्पोंडिंग आसी मल्टीप्लाई होकी ऐड हला, देन द वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। आउ जदि डिटरमिनेटर जो वैल्यू रहे तार करस्पोंडिंग एलिमेंट रो को फैक्टर छाड़ी आउ कोन एलिमेंट आसला, देन दैट इज इक्वल टू 0। तो अरेंज कर लिखि देले गोटे सेट आसला डिटरमिनेटर एलिमेंट ता सहित तार करस्पोंडिंग को फैक्टर आ गोटे फैक्टर आसीगला 0। तो गोटे आसला डेल्टा गोटे 0, आ क्योंकि डेल्टा गिवन इज 1, डेल्टा 1 अछि तो डेल्टा को 1 पुट कर देले, बाकी 0 हो गया। क्लियर? नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट द सेकंड क्वेश्चन इज, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। पहले सॉल्व कर देते हैं। cos x into cos x minus 1 minus of minus plus sin x into sin x, this so cos x into cos x will be cos square x, 1 into cos x will be cos x, sin x into sin x will be sin square x. Now the sin square x plus cos square x becomes 1 minus cos x. आंसर पड़ा आसला 1 minus cos x आसला। नाउ ये जो आंसर आसला यार मैक्सिमम वैल्यू आपन दरकार, बुझला पहले कौन दरकार, मैक्सिमम वैल्यू। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x? जानछो cos x always lies between -1 to 1। cos x रो मिनिमम वैल्यू होची -1 और मैक्सिमम वैल्यू होची +1। जदि cos x 1 हबो, जदि cos x 1 हबो मैक्सिमम हबो, तो 1 - 1 कते हेगला 0 हे जो 0 हेगला। आ जदि cos x -1 हबो
cos x जदि -1 है 1 माइनस ऑफ -1 तो +2 हो तो 0 हो पारे या +2 हो पारे दिस वैल्यू को वैल्यू 1 माइनस cos x रो वैल्यू इधर 0 या 2 तो लेस देन इक्वल टू 0 मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 तो यार मैक्सिमम वैल्यू होची 2 मिनिमम वैल्यू पचारले 0 ठीक अछि कहीं ये भितर 1 माइनस cos x एमती गोटे फंक्शन अछि जो थरे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपन जणा अछि कोनटा मैक्सिमम वैल्यू cos x रो मैक्सिमम वैल्यू 1 cos x रो मिनिमम वैल्यू अछि -1 जदि cos x 1 हला एटी cos x को 1 पुट करले 1 -1 का आसला 0 आसला जदि -1 पुट करले 1 माइनस ऑफ -1 विल बी 2 तो मैक्सिमम वैल्यू दुटा जगह आंसर आछो एग्जाम रे जोटा पचारे सेटा लिख मैक्सिमम इज 2 मिनिमम is 0 maximum 2 minimum 0 now in this question you need to find the maximum value so the answer will be 2 only correct diba next question solve kariba look write the value of k if this is equal to k into this देखंतु first column रे अछि a common second column रे अछि a common third column रे अछि a common so take a from the first column a from the second column a from the third column then it is determinant of a1 b1 c1 and this is a2 b2 c2 and this is a3 b3 c3 and this is equal to k times a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3 this determinant and this determinant same cancel हो गला a into a will be a cube so k is equal to a cube this is the answer correct now let's move to one more question this is a 4 mark question ये 4 mark question केमती दे देखो first row is a minus b minus c 2a 2a 2b b minus c minus a 2b 2c 2c c minus a minus b now right hand side अपन कौन दरकार right hand side दरकार a plus b plus c the whole cube a plus b plus c the whole cube try to get one a plus b plus c first गोटे a plus b plus c आनियो चेष्टा करंतु केमती करिवे एथा सहित एटा ऐड करंतु या सहित याकू ऐड करंतु r1 plus r2 plus r3 r1 plus r2 plus r3 so let's write the LHS first LHS is a minus b minus c this is 2a this is 2a this is 2b b minus c minus a 2b and this is 2c 2c and c minus a minus b this is the question add kariba r1 is r1 plus r2 plus r3 property oriented question सब जत ऐड करियो this plus this minus b plus 2b will be b and minus c plus 2c will be c so the first element will become a plus b plus c now this plus this so 2a minus a will be a minus c plus 2c will be 2c and that is b so again this is a plus b plus c here also a plus b plus c this is 2b 2c b minus c minus a this is 2c and this is 2b and this is c minus a minus b correct first row ru देखो a plus b plus c common अछि so take a plus b plus c from the first row this will be 1 1 1 and this is 2b b minus c minus a and this is 2b this is 2c 2c c minus a minus एमती को गोटिए रो जदी तीनटा 1 पळे आसला कि तीनटा 0 पळे आसला नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी 1 minus 1 कर गोटे 0 हो गेला 1 minus 1 कर आ गोटे 0 हो गेला दुईटा 0 हो गेला लास्ट वाला 1 रे हम एक्सपांड कर दो so this is c1 column 1 can be written as column 1 minus column 2 and column 2 can be written as column 2 minus column 3 now so this is equal to a plus b plus c 1 minus 1 will be 0 1 minus 1 will be 0 1 this minus this 2b minus b will be b plus c plus a then this is b minus 2b minus b minus c minus a this is 2b 2c minus 2c 0 2c minus c will be c plus a plus b and this is c minus a minus b so first column ru a plus b plus c common neba a plus b plus c
into a plus b plus c from the first column. Second column ru again a plus b plus c common neva. So what will be left is 0, 1, 0. This is 0, this is minus 1, this is 1. This is 1, this is 2b, this is c minus a minus b. Now this is a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c becomes a plus b plus c the whole cube. Now this is 1 into, ये column छाड़ दियो, ये row छाड़ दियो. This is 1 minus 1, 1 into 1 minus 0. So this is 1. So 1 into a plus b plus c the whole cube is a plus b plus c the whole cube, and this is your RHS. So I said empty type of question, 6 marks or question. Correct? Empty type of question practice करिए. 1 mark question, 4 mark question और 6 mark question. तो मु बहुत परिश्रम करछि आपण माने भाई. भलो भलो कंटेंट डेवलप करछि, आ से कंटेंट को आपण को पाखरे उपस्थापन करियो चेष्टा करबी प्रॉपर वे, so that you will get the maximum benefit. तो मत चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आ बेल आइकन को प्रेस करंतु, so that the video will reach to the maximum. ठीक अछि. तो नेक्स्ट वीडियो आसिला पर्यंत ये वीडियो को भले कि देखो. वीडियो देखले खाली देखंतुनी, नोटबुक पेन धरी की क्वेश्चन मु लिखली, क्वेश्चन आपण लिखंतु, क्वेश्चन लिखला पर निजे सॉल्व करियो चेष्टा करन. सॉल्व न करि पारले स्क्रीन देखंतु. एमती करी आगु बढ़ी चलिबा. पूरा पोर्शन कंप्लीट करिबा विथ इन 15 to 20 days. आपण माने सपोर्ट करिवे, पिला माने भलो पढिबे आ भलो मार्क आनिबे. राइट? मिसबा नेक्स्ट लेक्चर रे और नेक्स्ट वीडियो रे. आ जदी ग्रुप रे न्यू आछंती कि फर्स्ट टाइम करी मोर वीडियो देखछंती, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आ टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करंतु, डाउनलोड करंतु सब पीडीएफ जो क्वेश्चन हमें करूचे तार सब पीडीएफ मु आपनको टेलीग्राम ग्रुप रे देछि. तो टेलीग्राम ग्रुप रो जो लिंक अछि मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दिबी. आ सबु लेक्चर जेति की लेक्चर मु नेबी सबु लेक्चर गुडा हमें प्लेलिस्ट फॉर्म रे अरेंज करिक रखिबू YouTube रे. कृष्णा मैथ्स को सब्सक्राइब करंतु और रेगुलर देखंतु. ठीक अछि. बाय बाय.